वेलकम टू योर चैनल ओडिशा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे स्नाइडर पीएलसी के बारे में। स्नाइडर पीएलसी का सॉफ्टवेयर है इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपोर्ट। इसमें कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, सॉफ्टवेयर ओपनिंग कैसे होता है, सिमुलेटर कैसे काम करता है, कैसे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, हम आज सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपोर्ट्स इन दिस कंप्यूटर। ओके, पहले डबल क्लिक कीजिए आइकॉन के ऊपर। दिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर EcoStruxture machine export basic for Schneider PLC. Okay, after opening, continue. Okay, then inactive, apply. Okay, go to configuration. Then you have to select the PLC, means controller. Okay, already have here, already have the controller. Okay, here the types of controllers are there. Okay, I am selecting the TM221C 2T24R. Okay, drag and drop here. Okay, then yes, do you want to replace TMTT1 M16R G by TM221C24R? Yes. Okay, this is the controller. Okay, in this controller, see 14 numbers of digital inputs, 10 numbers of outputs, 2 number of analog input, and 1 serial line port. Okay, and 100 to 240 volt AC supply. Okay, then go to serial line. Select the protocol, communication protocol. Okay, I am using the simulator. Okay, then I am selecting TMH2GDB. Okay, then apply. Okay, then go to programming, where we have to write the program. Okay, today I have to explain about some simple program on off. When NO switch will on, that time the output is energized. Then NO switch will release, that time the output will go off. Okay, de-energize. Okay, let's start. Okay, this is the contact switch, NO contact switch. Okay, I am placing the NO contact switch here. Okay, then output, this is the coil. Okay, I give the address here. Okay, I 0.0. Okay, then the symbol. Okay, this is the switch. This is the switch. Okay, okay, do you want to associate the symbol switch with the I0 input? I 0.0. Yes, output address, give the address. Okay, Q 0.0. Okay, symbol, this is the output, means motor, anything, motor. Okay, yes, then go to commissioning. Okay, launch the simulator. Okay, we have to use the simulator. Okay, because we don't have any virtual PLC. Okay, real PLC, so we have to use the simulator. After that you have to start controller. Okay, you you have about to launch the controller. To do so, click OK, otherwise click cancel. Okay, okay, you have to start. Okay, then go to programming. Okay, after writing the program, after launch the simulator, go to compile. Okay, after writing the program, simulate. Okay, simulate, then go to commissioning, launch the simulator.
launch the simulator, then start the controller. Okay, then go to program. See here, this is the I 0.0. Okay, I'm activating the 0.0, means I'm selecting the push button. Okay, I'm pressing the push button. Okay, पहले आप push button. Okay, this is the push button. See, when input is true, that output also true, means motor is energized. Here also in ये out. इन देखिए इनमें 0.0 आउटपुट में 0.0 एनर्जाइज. ओके, सेम यू हैव टू इनपुट को मैं रिलीज कर रहा हूँ. ओके, देखिए आउटपुट आल्सो डी एनर्जाइज. ओके, थैंक यू. दिस इज द स्नाइडर पीएलसी इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपोर्ट का सॉफ्टवेयर ओपनिंग. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को हम सिमुलेट करके कैसे काम करता है, हम इस सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे. ओके.